गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 की फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। Here are real numbers. Real numbers means all the numbers including rational and irrational, means total number systems we are studying from previous classes. Those comes in real numbers. Real numbers को basically दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है rational numbers, दूसरा है irrational numbers. Now comes the first topic. What is rational number? Rational number are those numbers which can be expressed in the form of p by q. In the form of p by q, where q is not equals to 0. Where q is not equals to 0. क्योंकि अगर q 0 होता है, that becomes infinity. We can't divide any number by 0. So the numbers which can be expressed in the form of p by q, those are called rational numbers. Example 2 means all the whole numbers are also rational numbers. This because it can be expressed in the form of p by q with the help of denominator 1, including 0, 3 by 4. These type of numbers are known as rational numbers. And the second category is irrational numbers, the numbers which cannot be expressed in the form of p by q. जिन numbers को हम p by q के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उन numbers को हम बोलते हैं irrational numbers. Examples such as √2, √3, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 10 का ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। हमने प्रीवियस क्लासेस में, छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा है डिवीजन रूल के बारे में, दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। वही सेम चीज क्लास 10 में हम डिस्कस करेंगे एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। जैसे फॉर सम इंटीजर, for some two positive integers a and b, there exist two unique integers q and r such that a is equals to bq plus r. अगर हम अपने पुराने जो प्रीवियस क्लासेस में डिवीजन रूल हमने पढ़ा था उसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करें, यहाँ a becomes the dividend, b becomes the divisor, q becomes the quotient and r becomes the remainder. Same as the division rule, where r is always greater than equal to 0 but less than b. जो remainder जो है वो हमेशा divisor से बड़ा होगा और या तो 0 के इक्वल होगा और नहीं तो 0 से बड़ा। With the help of Euclid division lemma, we can find the HCF of any two given numbers. Euclid division lemma का यूज हम HCF फाइंड करने में किन्हीं दो नंबर्स का, एनी टू नंबर्स का हम HCF फाइंड करने में उसका हेल्प ले सकते हैं। It is same as the division rule, as I have told previous. Same as division rule, जैसे हम division rule फॉलो करके हम कोई दो नंबर का डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करते थे, दैट द सेम थिंग इज इन क्लास 10 बट इट इज नेम्ड एज यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम। जस्ट एन एग्जांपल, फाइंड द HCF ऑफ 135 and 225. सपोज दिस इज एन एग्जांपल। विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा वी विल फाइंड द HCF ऑफ these two given numbers. First we will start as in this way, since 225 is greater than 135, by applying Euclid's division lemma, we can write that 225 is equals to 135 into 1 plus 90. Now question arises, how the statement came, how this equation came. When we divide 225 by 135, we get the quotient 1 and the remainder is 90. And the remainder is 90. Since remainder equals to 90, that is not equals to 0. So again applying Euclid's division lemma to 135 and 90, we can write 135 equals to 90 into 1 plus 45. Now what is the 135 and 90? In the previous step the divisor was 135 and the remainder was 90. Until we reach remainder equals to 0, we have to continuously apply Euclid's division lemma. So in the second step, 135 serves as the dividend and 90 as the divisor. When we divide 135 by 90, quotient comes 1 and the remainder is 45, means the remainder is not equals to 0. Again, since remainder is equals to 45, that is not equals to 0, again applying Euclid's division lemma to 90 and 45, means in the previous one, which was the divisor and the remainder, in the next step that becomes dividend and the divisor. We can apply Euclid division lemma, these two, and we can write that 90 is equals to 45 into 2 plus 0. In this step, the remainder becomes 0. And when the remainder comes 0, we have to stop our process of dividing. Means
our process of applying Euclid division lemma. The step in which the remainder becomes 0, we have to note what is the divisor. What is the divisor? Since remainder equals to 0, our process stops with divisor equals to 45. This divisor is the HCF of the given two numbers 225 and 135. That is equals to 45. In this way, with the help of Euclid division lemma, we can find the HCF of any given two numbers. In the previous class, that was the question 1 from exercise 1.1. Now we will discuss question number 2, that the maths is show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. It also depends upon the Euclid division algorithm. With the help of Euclid division algorithm, we can prove that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. To solve this problem, we have to start in this way. Let a be any integer. Let a be any integer, and for b is equals to 6, we can use Euclid's division algorithm and we can write a is equals to 6q plus r. A is equals to 6q plus r, where q is greater than or equal to 0 and r is less than equal to greater than or equal to 0 and less than 6. Means the value of r starts from 0 and ends at 5, less than 6. It cannot be greater than 6, because in division we know that the remainder is always less than the divisor. Remainder never is greater than the divisor. If it is greater than the divisor, it means the division is wrong. The division is wrong. So keeping that thing in the mind, we can use Euclid division algorithm and we can write for the integer a and b is equals to 6, a is equals to 6q plus r, where q is greater than or equal to 0 and r is greater than or equal to 0 and less than 6. That is, the value of r starts from 0 and ends at 5. That is equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5. ये जो हमें मिला a is equals to 6qr, we got 6 a is equals to 6qr. Now इसके बाद हम r की जगह पर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 वैल्यूज बैठाएंगे और हम a का वैल्यूज फाइंड करेंगे. जैसे जब हम r equals to 0 बैठाएंगे, when we will put r equals to 0 in a is equals to 6q plus r, we get a is equals to 6q plus 0. As it is 0, मैंने यहाँ लिखा नहीं है 0. That is a is equals to 6q. Now a is equals to 6q means 6q is equals to 2 into 3q. Any integer which has 2 as factor, कोई भी एक integer जिसका एक factor 2 हो, वो हमेशा even होता है. तो यहाँ से एक चीज क्लियर होता है कि ये जो 6q है ये एक इवन नंबर है, क्योंकि 2 इसका एक फैक्टर है. उसके बाद हम फिर r की जगह पे 1 दूसरा वैल्यू 1 बैठाएंगे. We will put r equals to 1 in the same equation. A is equals to 6q plus r. तो हमें मिलेगा a is equals to 6q plus 1. इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें हम 2 कॉमन नहीं ले सकते. There is no any common factor within 6q plus 1. So it is an odd number because it does not have 2 as a factor. क्योंकि इसमें 2 फैक्टर है नहीं, इसीलिए ये एक odd integer है 6q plus 1. Again दोबारा फिर r is equals to, अगर हम a is equals to 6q plus r की जगह पे 2 बैठाएं तो हमें मिलता है a is equals to 6q plus 2. We get 6a is equals to 6q plus 2 in which जिसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं. 2 और 6 दोनों ही 2 के डिविजिबल हैं, इसीलिए 2 से डिविजिबल होने के कारण दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं. ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3q plus 2. It means that it is divisible by 2. It is divisible by 2 because it has 2 as a factor. So a is equals to 6q plus 2 is an even number. Next ठीक उसी तरह से दोबारा r की जगह पे हम 3 बैठाएंगे. जैसे ही 3 बैठाएंगे हमें मिलेगा a is equals to 6q plus 3. अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसमें हम 2 कॉमन नहीं ले सकते. यहाँ पे 2 कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें 2 कॉमन नहीं है, 2 इसका एक फैक्टर नहीं है, इसीलिए ये एक ऑड नंबर है. इसे हम ऑड कहते हैं because it does not have 2 as a factor. Next, for r is equals to 4,
अगर r की जगह पे हम 4 बैठाएं, we will get a is equals to 6 cube plus 4. 6 cube plus 4 में से 6 और 4 दोनों 2 से डिविजिबल है, मतलब हम 2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद विद ब्रैकेट 3 cube plus 2 बचेगा। It proves that it is divisible by 2 as it has 2 as factor. इसका 2 एक फैक्टर है, इसीलिए हम कह सकते हैं that it is an even number. Again हम r is equals to 5, that is the last value of r, जो r का अंतिम वैल्यू है, r is equals to 5 बैठाने पर हमें मिलता है a is equals to 6 cube plus 5. 6 cube plus 5 में से हम 2 कॉमन नहीं ले सकते, means it does not have 2 as a factor. इसका 2 फैक्टर नहीं है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। इससे ये पता चलता है कि ये 6 cube plus 5 एक ऑड नंबर है। r का वैल्यूज r is equals to 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक बैठाने पर हमें 6 रिजल्ट्स मिले, जिनमें से a is equals to 6 cube plus 1, जहां r का वैल्यू 1 है, a is equals to 6 cube plus 3, r का वैल्यू 3, a is equals to 6 cube plus 5, r का वैल्यू 5। ये तीन ऐसे हैं जो तो r के इन तीन वैल्यूज के लिए फॉर द थ्री वैल्यूज ऑफ r is equals to 1, r is equals to 3 and r is equals to 5, हमें मिला a is equals to 6 cube plus 1, a is equals to 6 cube plus 3 and a is equals to 6 cube plus 5। ये तीनों ही ऑड फॉर्म से ऑड नंबर्स हैं, ये तीनों ही ऑड नंबर्स हैं, 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दैट कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वो हमेशा इन तीनों रूपों में ही रहता है, 6 cube plus 1 और 6 cube plus 3 और 6 cube plus 5। इट मींस any positive integer is any positive odd integer, not integer, any positive odd integer is always of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5. That's it.